Congratulations. That is Sezel from 5th B class. Sezel girl, congratulations sir. Yes sir, come on the stage. तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कीजिएगा। Please sir, have me. His name is Joginder Singh. Welcome him again. Thank you sir. Thank you. हम जानते हैं आप है बेकरार, पर सिर्फ कुछ पलों का इंतजार और फिर शुरू होगा ये शो एकदम धमाकेदार। With all eminent guests on the stage and the parents too, thank you all of you for coming. So, ladies and gentlemen, जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा रही है, अतिथियों का स्वागत करना, उनके हृदय, अपने हृदय से उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। उनके सम्मान के लिए हमारे स्कूल के कुछ बच्चे अंकित करते हुए के पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल में शुभ संध्या पर मैं शिवानी, मैं शुभम, आप सभी का अपने विद्यालय के प्रांगण में सभी ईश्वरीय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीवन का आनंद स्वयं को जानने में है, स्वयं की प्रतिभा हुनर पहचानने व उसे विकसित करने में है। प्रतिभा एक छोटा सा शब्द है जो अपने आप में अनेक मुस्कानें समेटे हुए है। हमारा विद्यालय इन छोटी छोटी प्रतिभाओं को निखारने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, किंतु मंच मिलने पर इन प्रतिभाओं के द्वारा मंजिल पर पहुंचने के लिए नन्हे नन्हे कदम अपना सफर शुरू कर ही देते हैं। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना न भूले। ये कुछ ऐसे पल हैं जो हृदय को छू जाते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह हम दीप प्रज्वलित करके अपने कार्यक्रम को निर्विघ्न शुरू करने के लिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आप सबने हर शुभ कार्य से पहले दीप प्रज्वलन में जोत जलाने की प्रथा तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम हर शुभ कार्य से पहले दीप प्रज्वलन क्यों करते हैं? दीप प्रज्वलन के पीछे सबकी अपनी अपनी एक भावना होती है। एक गृहिणी घर में दीप जलाती है ताकि उसके घर में खुशहाली व शांति का वास हो।
May I take this opportunity to welcome Ma'am Parmeshwari Huda ji, who is the DEO of this Sonipat, and ETO, Mr. Vijay Malik. I think you don't need any introduction of him because he is a known and very renowned personality here, and to extend a further word of welcome to you all, sir and ma'ams. This Ishwar International School started, I think, Ishwar Singh Malik, whose photograph is here with us, though he is not physically present with us, but his soul and all his well-wishes are always with us. The Ahwan is certainly a moment that has brought us together this evening and will do the same in future. So, we all should savor and enjoy this event. If you take a quick look around you, you will surely find that EIS has come a long way in last few months. It all had started with the dream of establishing a world-class institution that could uplift the status of the area concerned and the state as well. Our institution aims to mold and guide the future generations of enlightened minds. It's just 20 whole months when we had started our pious journey. Since then, we have tried our best in the related field. Our well-qualified faculty works with dedication, and their honesty and dedication is manifested in the results we have observed recently. Our students cleared up initial levels of International Science and Maths Olympiad held recently. Tanisha, a student of class 8, stood first in district level essay writing competition Beti Padhao, Beti Bachao, and you might have seen her photograph in all leading newspapers. These are just the result of our beginning. Our objective is to inculcate and infuse a global outlook in our every single discipline. We try to give our students world-class education
using every possible methodology so that they can find themselves, adapt in the fields they are willing to go in. Smart classes, well-equipped science, computer labs and many other modern gadgets are available here to serve the students with very suitable environment for the international language English. We focus more on the conceptual clarity as well as the all-round and the holistic development of a child. During the last session, the academic excellency was our main focus among our students, and we definitely found our plans working accordingly. In the forthcoming session, our focus is upon excellency in the academics along with the sports, music and other co-curricular activities. We want to take this school to the international level. I can assure you all of distinguished quality because our vision is a bit spiritual and non-materialistic. We don't believe in the other side of the table. We are planning to have the international and cultural exchange programs in the forthcoming session. With these words, I would seek your consent so that we can carry out our program successfully. I won't be in between you and your children on the stage. Thank you. Good evening once again and welcome you all. Please request us to start the program. It is said, no prayer bear fruits invokes in the name of Lord Ganesha first. Hindu recite the Ganesh Varna as